सलाम और आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे सो साउथ और मैं हूं आपकी आफरीन हुसैन। कट 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 रीटेक इन इंग्लिश। सॉरी, वो फर्स्ट में दखनी में बोल दी। कई को बोले तो कैंपेनिंग भी तो दखनी में हो रही ना तेलंगाना में। अब कटकर को इंग्लिश में बोलती हूँ, एडिटर गुस्सा हो रहे हैं यहाँ। Well, hello and welcome. You are watching India Today So South and I am Afreen Hussain. With the fourth phase of the Lok Sabha elections 2024 due in Andhra Pradesh and Telangana on May 13, 2024, it has become common for politicians to use Dakhni while campaigning in the Telugu states. Interestingly, from Prime Minister Narendra Modi to BJP's Madhavi Lata, who is pitted against AIMIM chief Asaduddin Owaisi, everyone seems to be trying their hand at wooing the Dakhni-speaking voter base. Prime Minister Modi, while addressing a public rally in Hyderabad yesterday, used the local Dakhni dialect. आओ सुनेंगे जरा। तेलंगाना कह रहा है कांग्रेस नक्को, बीआरएस नक्को, एमआईएम नक्को, बीजेपी कोई वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। Nakko ba nakko. Now for those of you who don't know what nakko means, it's a Dakhni word for saying no, or as you say in Hindi, nahi. Following Modi's Dakhni debut, sitting MP from Hyderabad and AIMIM chief Asaduddin Owaisi, who is popular for his wit and humor and his Dakhni speeches, poked fun at the Prime Minister. Owaisi, while addressing a public rally in Bahadurpura, used the famous comical Dakhni line, "Baigan ko bolo," to retort to Prime Minister Modi. Suno sunao. मोदी, बैगन को बोलो, रजाकार का झूठ, बैगन को बोलो, आत्मनिर्भर की बातें, बैगन को बोलो, मुस्लिम रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो, आईसीस रोहिंग्या घुसपैठी की गालियां, बैगन को बोलो, क्रिकेट टीम में मुसलमानों को रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो, 56 इंच की बातें। अब उसके बाद और एक है, और एक क्या है, हाउ या नक्को में बोलने का। यहाँ मोदी नक्को बोले ना, तो हाउ या नक्को में आपको बोलने का है। मोदी के 5 और साल हाउ या नक्को, बेरोजगारी के 5 और साल हाउ या नक्को, गुर्बत के 5 और साल, बोलिए जुल्म के 5 और साल, हिंदुत्व के 5 और साल, बुलडोजर के 5 और साल, गौरक्षक दहशत के 5 और साल, हिजाब अजान और हलाल के गाली के 5 और साल। मोदी जी नक्को 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 नक्को, मोदी जी अब नक्को, अब आप रुक जाओ। अब आप जो है, आप खुद मार्गदर्शक मंडल बनाए अपनी पार्टी का, जरा सोच लीजिए आप क्या क्या बोलने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको सिर्फ पोलिंग कराना है। He said, and I quote, "Listen Modi, RSS, Baigan ko bolo, lies on Razakars, Baigan ko bolo, all that talk on Atmanirbhar Bharat, Baigan ko bolo." He then asked the audience to reply with a how, which means yes, or nakko, which means no, like I told you before. When Owaisi said 5 more years of Modi, the crowd replied saying nakko. 5 more years of Hindutva, bulldozers, terrorism of Gaurakshas, spreading lies on the Muslim quota, scaring the people by referring to ISIS and Rohingyas, unemployment, poverty, targeting the hijab, azan and halal, lies about reservation for Muslims in Indian cricket team, 55-inch chest, all received a huge nakko. Nakko, 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 Owaisi said before the end of his speech. BJP's newly minted firebrand leader Madhavi Lata, who is pitted against Owaisi from Hyderabad MP constituency, also flaunted her Dakhni speaking skills at multiple public rallies. Let's take a look. तो सो रहे थे पूरे जीएचएमसी वाले, क्या कर दावता कर ले रहे थे। अरे मुसलमान भारतीय नहीं है, देश के नहीं है, तो क्यों फायदा नहीं होना उनको, बराबर होना उनको फायदा। Now let me tell you a little bit about Dakhni. Well, Dakhni is a form of Urdu predominantly spoken in the southern cities of India. The roots of this local dialect originate in the capital of the country, Delhi, and can be traced back to the 1500s. The old Urdu, Dehelvi, which was spoken in Delhi, was brought down to the south by various Muslim rulers like Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq when they came here for their conquests.
Eventually, they returned but left behind Urdu here. And as time passed, vernacular languages like Kannada, Tamil and Telugu amalgamated with Dehlmi to create Dakhni. Now, Dakhni has taken center stage not only on the internet in recent times but also amongst the politicians now. Dakhni has caught all the rage through this campaigning season. क्या बोलती public? जरा comment करके बोलो हमारे को भी. This is Afreen Hussain and you are watching India Today So South.